Hello, my dear viewers. My name is Anowar and Barbhuiya, and I welcome you to my channel AHB Physics. We are studying class 12 physics. In class 12 physics, we are studying magnetism and matter. So this is chapter 5. For chapter 5, we have already gone for 2 lectures. There is lecture 1 and lecture 2. So this will be basically lecture number 3. So in this lecture, we will study the basics. These are very similar to your electrostatics. So we can say these are magnetostatics. Now see, what we are going to study today is Coulomb's law in magnetism. So you might have remembered the Coulomb's law in electrostatics. What was Coulomb's law in electrostatics? Coulomb's law was, if we consider that we have 2 point charges, say the 2 point charges are Q1 and Q2. If these 2 point charges are separated by a certain distance apart, say the distance is r, then Coulomb's force is proportional to the product of magnitude of charges. That is, F is proportional to magnitude of Q1, Q2, inversely proportional to square of distance, that is r square. Combining these two, we get F is proportional to Q1, Q2 by r square. When we make them equal, then it becomes F equal to K Q1, Q2 by r square. What was that K? It is an arbitrary constant. What we called it, that constant? We call it as, it is an arbitrary constant. We call it as electrostatic force constant. So similarly, in magnetism, we have Coulomb's law in magnetism. So the statement is also same. What is the statement? The statement is the force of attraction or repulsion between two poles of pole strengths M1 and M2 placed at a distance r apart is found to be directly proportional to the product of their pole strength and inversely proportional to the square of the distance between them. What does it mean? जैसे अगर हम लोग बोलते हैं Coulomb's law of electrostatics, उसमें क्या था, हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है. मान लीजिए the 2 point charges are Q1 and Q2. So these are the 2 point charges. Suppose the distance between these 2 point charges is r. The distance of separation between them is r. What is Coulomb's law? The force, that is the magnitude of force, is directly proportional to the product of magnitude of charges Q1, Q2, inversely proportional to the square of distance, that is r square. If we combine these two, we get F is equal to K Q1 Q2 divided by r square. Now what is this K? This K is an arbitrary constant and its magnitude is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by r square. So this was Coulomb's force. So what is this K? This K is an arbitrary constant. We call this K as electrostatic force constant. What is its magnitude? The magnitude is 9 into 10 power 9. The same way, if we define Coulomb's law in magnetism. So how to define Coulomb's law in magnetism? Say we have 2 poles. Say this is a bar magnet. This is one pole, this is another pole. If we consider one more bar magnet here, it is not required this, the 2 magnets should be equal in size. Say it is not required. Suppose this is the north pole and this is also the north pole. So this is north pole. Here north pole, north pole. Suppose the pole strength of this pole. So there we are using a quantity. It is called pole strength. Suppose the pole strength of this pole is M1 and the pole strength of this pole is M2. If these 2 poles are separated by a distance, suppose the distance of separation between these 2 poles is r. So this is north pole, this is also north pole, so there will be force of repulsion. This will repel this. So there is force of repulsion in opposite direction. So similar to that, we can define Coulomb's law in magnetism. So if we define it mathematically, how can we define? So mathematically, if you write, then the force is directly proportional to the product of वहाँ पे क्या magnitude of charges, यहाँ पे to the product of pole strength. So what is M1? It is the pole strength of this magnet. What is M2? It is the pole strength of this magnet. So if this is north pole, obviously this will be south pole. If this is north pole, this will be south pole. तो यहाँ पे एक चीज है, सी आप जब चार्ज को लेते हो, एक Q1 है दूसरा Q2 है, तो यहाँ पे आप आइसोलेटेड लेते हो, एक Q1 अलग है Q2 अलग है, तो क्या आप ऐसे नॉर्थ पोल को अलग कर सकते हो? कैन यू टेक ए नॉर्थ पोल सिंगल?
वी कैनॉट आइसोलेट मैग्नेटिक पोल्स, मीन्स मैग्नेट का जो पोल्स है वो हमेशा डुअल आता है, मीन्स मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल्स मीन्स सिंगल पोल मैग्नेट का आपको कभी भी नहीं मिलेगा। मैग्नेट का अगर कभी भी आपको पोल मिलता है हमेशा दो पोल का मिलेगा, सिंगल पोल का मैग्नेट आपको नहीं मिलेगा। So if we say the force, यहाँ पे देखिए, the force of attraction or repulsion means if these two poles are same, that means if both are north pole or both are south pole, so there will be repulsion. If one is north pole, the other is south pole, then there will be attraction. So the force of attraction or repulsion between the two poles, दो poles के बीच में, of pole strength M1 and M2, एक का pole strength M1 है, दूसरे का pole strength M2 है, placed at a distance r, दोनों के बीच में distance r है, apart is found to be directly proportional to the product of their pole strength. So force is proportional to product of pole strength. Force is inversely proportional to the square of distance between them. If you combine these two, we get F is proportional to M1 M2 divided by r square. So wherever there is proportionality, there is always a constant. तो यहाँ पे भी एक constant आता है K M1 M2 divided by r square. K M1 M2 divided by r square. Now this constant K is equal to, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो मैग्नेटोस्टैटिक्स में क्या है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, it is m1 m2 divided by r square. So what is this K? It is an arbitrary constant where K is equal to mu naught divided by 4 pi, and it is an arbitrary constant, and its magnitude is, what is mu naught? Mu naught is 4 pi into 10 power minus 7 divided by 4 pi, so it will be 10 power minus 7, and the SI unit is Tesla meter per ampere. इसका और एक यूनिट है और we call it as Weber per ampere per meter. तो ये दो यूनिट्स है, एक है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, दूसरा है वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, सो दिस इज कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। हो गया, एनी डाउट? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, वैसे दो मैग्नेट्स के दो पोल्स के बीच में भी फोर्स लगता है। तो मैग्नेट का जो पोल्स होता है उनका स्ट्रेंथ को डिफाइन किया जाता है। मान लीजिए एक मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ है m1, दूसरे का पोल स्ट्रेंथ है m2, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू m1 m2. फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. If we combine these two, we'll get F is proportional to m1 m2 divided by r square. So F will be equal to K m1 m2 by r square. F will be, ये जो K है इसका मैग्नीट्यूड है म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसका जो एक्चुअल वैल्यू है इट इज 10 पावर माइनस 7 ओनली. सो म्यू नॉट बाय 4 पाई इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 7 ओनली. सो 10 पावर माइनस 7 इसके यूनिट क्या है? टेस्ला मीटर पर एम्पियर और वेबर पर एम्पियर पर मीटर. नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ. Unit of magnetic pole strength. Unit of magnetic pole strength. तो जैसे आप लोगों ने वहां पे कूलम्ब्स लॉ पढ़ने के बाद आप लोगों ने क्या किया था? यूनिट ऑफ चार्ज डिफाइन किया था. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज व्हिच इज कूलम्ब. सो वी कैन आल्सो डिफाइन द यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ. कैसे डिफाइन कर सकते हैं? So unit of magnetic pole strength. So magnetic pole strength के यूनिट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? So from Coulomb's law in magnetism, Coulomb's law in magnetism. What is Coulomb's law in magnetism? Coulomb's law in magnetism is F is equal to, simply you can write 10 power minus 7 m1 m2 divided by r square. So now if you consider, suppose this two pole strength, that is m1 is equal to m2 is equal to m6. So we are considering both the pole strengths as equal. Say the pole strengths are m, distance r is 1 meter, and the force, that is F, is equal to 10 power minus 7 Newton. We are considering. If we consider this, so what is force? It is 10 power minus 7 will be equal to 10 power minus 7
m1 m2, so it will become m square divided by distance r, so it is 1 square. So you can say m square is equal to 1, or m is equal to plus or minus 1. M is equal to plus or minus 1, and the SI unit of magnetic pole strength is ampere meter. SI unit of magnetic pole strength is ampere meter, and we denote it as ampere meter square, sorry, ampere meter, like this. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे वहाँ पे हम लोगों ने चार्ज कूलम डिफाइन किया था, तो वैसे हम लोग यहाँ पे एम्पियर मीटर भी डिफाइन कर सकते हैं. सो डिफाइन 1 एम्पियर मीटर, हाउ टू डिफाइन, पहले ये लिखा फिर वो लिखा. सो नाउ वी आर डिफाइनिंग 1 एम्पियर मीटर. 1 एम्पियर मीटर, हाउ टू डिफाइन the pole strength of a magnetic pole is, the pole strength of a magnetic pole is 1 ampere meter, 1 ampere meter if definition, if it repels an equal and similar pole with a force 10 power minus 7 Newton placed in air at a distance of 1 meter apart. So how to define 1 ampere meter? 1 ampere meter is the pole strength of a magnetic pole. So the pole strength of a magnetic pole is 1 ampere meter if it repels. अगर ये repel करता है an equal and similar pole, means equal होना चाहिए और similar pole होना. Equal means equal in magnitude, similar pole means equal in magnitude. M1 M2 should be equal and similar pole means अगर ये नॉर्थ पोल है तो दूसरा नॉर्थ पोल को क्या करेगा, repel करेगा. With a force of 10 power minus 7 न्यूटन, इनके बीच में फोर्स कितना होना चाहिए, 10 power minus 7 न्यूटन होना चाहिए. प्लेस्ड इन एयर, कहाँ पे रखा है, एयर पे रखा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए. ठीक है, तो आप लोग इस चीज को कॉपी कर लें. जो मेरा स्टूडेंट है ऑलरेडी तो उनको नोट्स मिल गया है, जो मेरे स्टूडेंट नहीं है, बाहर के स्टूडेंट है, सो यू कैन कॉपी दिस, प्लीज कॉपी इट. दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है. कॉपी कर लिए. So now we'll study magnetic dipole and magnetic dipole moment. So these are also 100% similar to electric dipole moment. Only thing that you have to remember is for electric dipole moment there are two charges. The two charges are isolated, and for magnetic dipole we will consider two magnetic poles. These two magnetic poles are from two different magnets because we cannot isolate the magnetic poles. ठीक है? So now we'll study magnetic dipole. What is a magnetic dipole? Magnetic dipole. What is an electric dipole? An electric dipole is an arrangement of two charges equal in magnitude, opposite in polarity, separated by a small distance apart. So what is a magnetic dipole? It is also an arrangement. It is an arrangement of
two magnetic poles, arrangement of two magnetic poles of equal and opposite pole strengths. An arrangement of two magnetic poles of equal and opposite pole strength means it is an arrangement of two magnetic poles. तो ये भी दो magnetic poles का arrangement है. Of equal means दोनों poles का जो strength है वो equal है. Equal and opposite pole strength means अगर एक north pole का होगा तो दूसरा क्या होना चाहिए, south pole का होना चाहिए. So arrangement of two magnetic poles of equal and opposite pole strengths separated by a finite distance is called magnetic dipole. Separated by a finite distance is called magnetic dipole. So a bar magnet is a simple magnetic dipole. If you consider a bar magnet, say this is a bar magnet. Say this is a bar magnet. इसका एक पोल ये है, दूसरा पोल ये है. Say this is north pole, this is south pole. इसका पोल स्ट्रेंथ m है तो इसका भी पोल स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, m होना चाहिए. तो यहाँ पे प्लस m माइनस m ऐसा कंसीडर नहीं करते हैं. मान लो इसका पोल स्ट्रेंथ m है तो इसका भी पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, m होगा. And there is finite distance between these two poles. Say the distance between these two poles is say r में 12. जैसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल में लिया वैसे ही अगर मान लीजिए 12 ले लेते 12. So the distance between them is 12. So this becomes a magnetic dipole. ये क्या हो गया, एक magnetic dipole हो गया. तो इसके रिलेटेड थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन चाहिए. दैट इज मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिक लेंथ. मैग्नेटिक लेंथ, व्हाट इज मैग्नेटिक लेंथ एंड व्हाट इज ज्योमेट्रिक लेंथ. सो मैग्नेटिक लेंथ नाम से पता चलता है कि मैग्नेट का लेंथ. सो व्हाट इज मैग्नेटिक लेंथ. अगर हम बोलते हैं हमारे पास कोई एक मैग्नेट है, मान लो ये एक मैग्नेट है. से दिस इज अ मैग्नेट. सो दिस विल बी अ पोल, दिस विल बी अनदर पोल. तो ये मान लो नॉर्थ पोल है, ये मान लो साउथ पोल है. तो दो पोल्स के बीच में, क्योंकि मैग्नेट का जो पोल्स होता है हमेशा मैग्नेट के अंदर होता है, तो दोनों पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है मैग्नेटिक लेंथ. उसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक लेंथ. और एक लेंथ होता है उसको कहा जाता है ज्योमेट्रिक लेंथ. तो मैग्नेट के दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, मैग्नेट के दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है ज्योमेट्रिक लेंथ. और मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक लेंथ. सो व्हाट इज मैग्नेटिक लेंथ. इट इज द डिस्टेंस between the two poles of a magnet. Two poles of a magnet is called magnetic length. So magnet का जो poles होता है, मैग्नेट का जो पोल्स होता है वो हमेशा कहाँ होता है, मैग्नेट के अंदर होता है. तो दोनों पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है मैग्नेटिक लेंथ. सो द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ. एंड व्हाट इज ज्योमेट्रिक लेंथ. ज्योमेट्रिक लेंथ, सो द डिस्टेंस बिटवीन two end points of a magnet. Two end points of a magnet is called geometric length. Geometric length. तो दोनों मैग्नेट के एंड पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है ज्योमेट्रिक लेंथ. दोनों पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है मैग्नेटिक लेंथ. एक चीज है, ये जो चैप्टर है ये बेसिकली थियोरेटिकल चैप्टर है और इसको ऐसे ही थ्योरी की तरफ पढ़ना है. कुछ डेरिवेशन से वो कराएंगे, न्यूमेरिकल से वो भी कराएंगे, बट इंटरेस्टिंग है, लेकिन टीचर के लिए बहुत बोरिंग है बेसिकली, क्योंकि ये एक थियोरेटिकल चैप्टर है. और ये आपका पूरा 15 चैप्टर में से मुझे जो है सबसे ज्यादा बोरिंग यही चैप्टर लगता है पढ़ाने में. चलो पढ़ाना तो पड़ेगा. मैग्नेटिक लेंथ, the distance between two poles of magnet. Geometric length is the distance between the two end points of the magnet is called geometric length. हो गया. अब पढ़ना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट.
आप लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या पढ़ा था? The product of either charge and the dipole length is called electric dipole moment. So similar definition is for magnetic dipole moment. So magnetic dipole moment जो है इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं m वेक्टर से। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो वो आपको स्मॉल m ही इस्तेमाल किया है डार्क कलर करके, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, we use capital M वेक्टर। So magnetic dipole moment. So magnetic dipole moment is defined as magnetic dipole moment is defined as the distance defined as the product. So ये basically product है, defined as the product of strength of either pole. So magnetic dipole moment is defined as the product of strength of either pole. तो दोनों पोल में से किसी एक पोल का स्ट्रेंथ लेना है, that is magnetic pole strength लेना है। So magnetic dipole moment is defined as the product of pole strength of either pole. So ये pole strength बोलने से और क्लियर होगा। Defined as the product of pole strength of either pole and the dipole length. So what is dipole length? It is actually the magnetic length. Magnetic length. आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। So magnetic dipole moment is also a vector quantity. So it is a vector quantity. So magnetic dipole moment is also a vector quantity. So इसका मतलब इसका डायरेक्शन है। So the direction of magnetic dipole moment, what is the direction of electric dipole moment? It is directed from negative to positive charge. So similarly, the direction of magnetic dipole moment is direction of magnetic dipole moment is from south pole to north pole. So magnetic dipole moment is a vector quantity. The direction of magnetic dipole moment is from south pole to north pole. Okay. So if you write mathematically the magnetic dipole moment, how to define it mathematically? Mathematically, magnetic dipole moment is denoted as m vector. It is given as product of either of the pole strengths. Here the pole strength is m and the dipole length. Here the dipole length is twice l. So we can put it vector. So it will be along the length vector. So this is the magnetic dipole moment. और इसके रिलेटेड आपको क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक फील्ड, वो तो आपको पता ही है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेट के आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द स्पेस और द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट। इट इज द स्पेस और रीजन surrounding a magnet or a current carrying wire or a current carrying wire. The space or region surrounding a magnet or a current carrying wire up to which its effect can be felt or observed is called मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास के रीजन में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स को हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो चार्ज है या नहीं उसके बारे में हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सिमिलरली अगर कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट के आसपास में कोई रीजन होगा जहाँ पे उस मैग्नेट का इफेक्ट को हम लोग फील कर सकते हैं, या फिर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके अंदर करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा आसपास में, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग फील कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। सो आज का लेक्चर जो है यहाँ पे मैं
अभी का जो लेक्चर है यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपको बोला या नहीं बोला मैं भूल गया हूँ। आज से 3-4 दिन पहले मुझे एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा मुझे चेस्ट पेन है, शोल्डर लॉक हो गया था। तो मेडिसिन ले रहा हूँ, ठीक हो जा रहा हूँ, और आप लोगों का दुआ की वजह से बहुत जल्दी भी ठीक हो जाऊँगा, ठीक है। और आपका क्लासेस में कंटिन्यू करूँगा। टिल देन आप ये वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, पढ़ते रहिए, दिल से पढ़िए, एकदम दिल लगा के पढ़िए, ठीक है। अगर आप दिल से कोई भी काम करते हो, देयर इज़ नो चांसेस ऑफ फेलियर। अगर आप कोई भी काम को दिल से करते हो, आपको फेलियर होने का कोई भी चांस नहीं होता है। तो इसलिए आप दिल लगा के पढ़िए, होपफुली का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा होगा। मेरे लिए दुआ कीजिए ताकि मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊँ और अपना क्लासेस जो है जल्दी ले पाऊँ, जल्दी वीडियो बनाऊँ और आपका क्लासेस जल्दी ख़त्म कर दूँ और आपका सिलेबस भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। तो आप लोग जल्दी पोज मारिए और कॉपी कर लीजिए। हो गया, बाय बाय।